चलिए स्टार्ट करते हैं। बी रेडी। 5, 4, 3, 2, 1। Mr. Deputy Chairman, the middle class is amongst the people hit hardest by the new taxation policy. On the one hand, the tax on their income is on the increase and thereby their income is decreased, and on the other hand, articles of consumption are being subjected to forces which raise their prices. In these circumstances, it will be very difficult for these classes to balance their budget and the question of their saving anything and their investing their savings for purposes of common good is very problematic. Sir, the middle classes, as is well known, are the backbone of the society. They are the real workers of the land and they should not be disabled or made vitally less enthusiastic by these measures in contributing towards the success of the plan. The indirect taxes have really got an inflationary tendency. To a complaint made in this respect, the Honorable Finance Minister said that the inflationary tendencies are already there and that the government through these excise duties will be able to mop up a portion of the extra profits for the benefit of the exchequer, and he implied that these excise duties need not raise the prices in many cases. The inflationary tendencies are due to the play of market forces, and the prices will go up to a maximum that can be borne by the consumer. Sir, he seems to have a very tender heart for the inflationary tendency, but I do not know whether the inflationary tendency has got any compunction or consideration for the ability or the inability of the consumer to bear the prices that those tendencies may put up. In certain other cases, he admits that the excise duties do raise the prices, and in such cases, excise duties are designed to restrain consumption, either to bring about internal investment or to increase exports. In certain cases, I admit that higher prices may restrain and restrict consumption. For example, if the price of sugar is raised, people may consume less sugar. That is a known fact, but it does not stop there. In such cases, human nature must be taken into consideration. It is a matter of common knowledge that if sugar is beyond the reach of the people, they do not stop there. They take to other alternative articles. They go in for good or such other things, and therefore no saving is effected thereby. Sir, then take the private sector. Increased targets have been set up in the 10th five-year plan for this sector, and they have to fulfill those targets in the vital interests of the country, because the development in the private sector forms a vital part of the economy of the country as a whole. But the question is, under the present proposals of taxation and the conditions that will be created by giving effect to those proposals, how is this sector to find its resources for realizing the increased targets that have been set for it? Everyone, the common man,
the middle class person and the upper class man has to bear heavier burdens under the new taxation policy. The government want to mop up extra profits. They are increasing taxes on income and they cut even into the corpus of the capital through such taxes as those on wealth and expenditure, thereby reducing the wealth already formed through the savings of the people. Under the circumstances, one wonders how the private sector is to find its resources for enabling it to realize the targets set before them. I do not know whether the finance minister has said anything explicit or clear on this matter. If the targets of the private sector are not fulfilled, that will create a grievous gap in the development of the country. What I think is we must frame our plan mainly basing it on our internal resources and work that plan. Side by side with that, we may have another set of projects and schemes which may be executed as and when we get sufficient foreign exchange and foreign aid. Otherwise, what will happen is if we are not clear cut in this matter of keeping internal resources mainly separate from the foreign aid and foreign exchange, we will be landed in difficulties in the middle of the execution of the plan. Then it will be very difficult for the country to get back from the midstream. Then, if we set about to find foreign aid and exchange, the position of the country will have to be compromised in many directions, and that is not good for the country. Now, I want to deal with one or two concrete points which may bring in a sizable amount of foreign exchange to the country. One point is with regard to the export of raw goat skins. An export duty on the export of this article may be levied beneficially to the industry as well as to the country as a whole. There was an export duty of about 15% on this article. Stop. इसको लास्ट लाइन को सबसे पहले आप लिखेंगे ताकि वो कभी आपकी ख़राब ना हो, उसके बाद रीड करना है. अब हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ. चलिए चलते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ओर. मिडिल क्लास ऐसे आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर आप छोटा एम डालते हैं और साथ में कल डालते हैं और कहीं आपका खुदा ना खास्ता एस खराब हो जाता है तो वो मिडिल क्लास की जगह मेडिकल बन जाएगा. सो डू नॉट मेस इट विद दिस वर्ड. मिडिल को पूरा लिखकर नीचे क्लास आप लिख सकते हैं. प्रॉब्लमेटिक में आप प्रॉब्लम लिखिए और उसमें इक की बिंदी ऊपर लगा दीजिए. टैक्सेशन पॉलिसी में आपको पीक से काट देना है. एंथुजियास्टिक के स्पेलिंग याद करने, SIASTIC एंथुजियास्टिक. ठीक है. उसके बाद आता है देयर बाय में आई का वोवल हमेशा लगाइए. दीज मेजर्स में आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड में अ का वोवल डालने से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी. उसके बाद कंट्रीब्यूट में हमेशा यू का वोवल जोड़ के रखिए और कंट्रीब्यूटिंग में इंक की बिंदी लगा दीजिए. सब्जेक्ट का गर्दन से उसको काट दो. सब्जेक्ट को गर्दन से काट के रखोगे तो इट विल नेवर बिकम स्पेशल. ठीक है. और स्पेयर के लिए कोई मतलब इसको मेस नहीं होगा वर्ड को. ठीक है. तो एक बार काटने से हमेशा सब्जेक्ट बनेगा. इसकी अच्छी से तैयारी कर लेना. इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने टैक्सेस की अपना गोला डालो, बीच में बिंदी डालो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया. ठीक है. उसके बाद इन्फ्लेशनरी है. इन्फ्लेशनरी मेजर्स आएगा हमेशा. ठीक है. इसमें टेंडेंसीज आया हुआ है. इन दीज सर्कमस्टांसेस में आपने ऐसे इसमें जोड़ देना है. गुड आया है जिसको आपने ईजिली बना देना है. बजट को बी
को हमेशा काट के रखो ताकि ये भी खराब ना हो आपका वर्ड। एक्सचेकर के स्पेलिंग याद करने हैं, CHEQUER, एक्सचेकर, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइड और एम्प्लॉयड का फर्क देखो, अगर आप इम्प्लाइड लिख रहे हो तो दोनों की आउटलाइन सेम है, लेकिन इसको काट दो बीच में से तो ईडी बन जाता है। आई का वोवल डालोगे तो इम्प्लाइड होगा, ओए का वोवल डालोगे तो एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। फॉर द पर्पस को ऐसे लिखो, फॉर द पर्पसेस को बिंदी डालो। कंपक्शन जो वर्ड आया है आपका बीच में, उसको पी को आप काट के रख सकते हो ताकि आपको पता लगे ये कोई और वर्ड नहीं पढ़ना मुझे। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी गलत काम करने के बाद पछतावा होना, दैट इज कंपक्शन, ठीक है। इनएबिलिटी आया, इनएबिलिटी को इन से बी से डिसजॉइन कर दो, एबिलिटी को सिंपल पूरा लिखो। रिस्ट्रेन है, मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन को आपने इकट्ठा कर देना है, ये तो एक ईजी वर्ड है। टारगेट्स में अगर आप अपना वोवल डाल के रखते हो जीरो वाला तो आपका कभी भी वर्ड गलत नहीं होगा। वाइटल में आई का वोवल डाल के रखो। अंडर द प्रेजेंट को आपने हमेशा इकट्ठा लिखना है। जितनी तैयारी करोगे एटलीस्ट आधा आधा पेज तो जरूर भरा करो, ठीक है। फुलफिल को आपने लिख दिया, फिल करके फुलफिल्ड आ जाएगा आगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको काट देना। हैवियर को ई का वोवल हमेशा लगाना है। कॉर्पस वर्ड आया है जिसमें कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट होता है, उसे कहते हैं कॉर्पस, ठीक है। तो आपने के डाल के आर डाल के पी के साथ एस जोड़ना है। अंडर द सर्कमस्टांसेस फिर से आपने इकट्ठा कर देना है, इसका बिंदी आपने डालनी है। एक्सप्लिसिट ई की बिंदी आप डाल के रखो। और फुलफिल्ड में आपने इसको काट के रखना है। और ग्रीवस में आपने क्या करना है कि ई की बिंदी डाल के सीरियस कॉजिंग पेन और हार्म, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग आपने देख लिए, इसको हमेशा याद रखने हैं, GRIEVOUS, ठीक है। द क्राइम विच हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसा क्राइम जिसके टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसको कहते हैं ग्रीवस, ठीक है। ग्रीवियस नहीं बोलना मैं आपको, इसलिए मैंने उसमें वर्ड को स्पेशली आपको दोबारा से प्रोनाउंस किया था। मिड स्ट्रीम आपने इकट्ठा रखना है। मिड स्ट्रीम के लिए सेट अबाउट में अबाउट के लिए आउ का वोवल डालना है। साइजेबल में आई की हमेशा वो डालनी है वोवल आपको, गॉट। और उसके बाद बेनिफिशियली की स्पेलिंग आपने याद करना है, FICIALLY। लेवीड में आपने काट के रखना है। तो ये आपकी डिक्टेशन के मुश्किल वर्ड्स हो गए, इसको आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। और इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है। और शेयर ऑल्सो करें प्लीज़।